Today we are going to discuss about an important part, that is the very short questions of your syllabus, which is very important for your semester exam. As we know, the COVID-19 is going to very last, and after the shutdown the council may announce a sudden exam. So for this we are going to start preparation from now, and these are some questions for 2 marks. So start our class. I discuss briefly on each and every terms. Let's start. हाँ सेडरे डाका है जूस लोड हाँ मु सेडा कहूची ना, से डेफिनेशन टा मु डाकुची એટલે અભિજીત પાખરે બોધે ନାହିଁ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ଟିକେ। to हाँ produce it is unit defined as unit quantity of heat, है ना? It is the amount of work done to produce unit quantity of heat. अभिजीत हल्ला आमिश करेक्ट डेफिनेशन लिखिलु तो? हाँ, आमिश it is the amount of work done to produce unit quantity of heat. Okay, next question. आमिश Next question, specific heat. Specific heat. तो specific heat रे मु फर्स्ट बुझी थिली जदि हमें गोटे substance mass अधिका अछि, then amount of heat also increase to raise the temperature, that is they are directly proportional to each other. जदि हमें heat increase करिया temperature भी increase हबो, समस्या कोन interlinked. So a case रे Q is equal to ms theta, because Q is directly proportional to the amount of substance. The heat is directly proportional to the amount of mass. The mass अधिका अच्छी, heat भी अधिका दरकार. यदि heat अधिका अच्छी, then temperature भी increase हबो से amount रे, then they are directly proportional to each other. Q is proportional to m and Q is proportional to theta. That is Q proportional to m theta, which is equal to Q is equal to ms theta. Here S is the constant of proportionality known as coefficient of specific heat. The specific heat kono, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 degree centigrade. गोटे ग्राम रो सब्सटेंस को तार टेम्परेचर टा 1 डिग्री सेंटीग्रेड आने पे हमु जत्ते की हीट दरकार से हीट टा हला तमरो स्पेसिफिक हीट। आर यूनिट कोन? किलो कैलोरी, केजी इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। सीजी सिस्टम रे किलो कैलोरी टा कोन? कैलोरी, केजी हला ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स स्टडी छोड़ा है जी, निजे टिके टाइप कर दियो, सेटा लिखि दियो हला। The dimensional formula is equal to m0 L2 T minus 2 K minus 1. The dimensional formula unit ए सब मु जिंस बुझी छी, Q is equal to ms theta जो जनरल फार्मूला अछि, हमें सेठु ही ए सब जिंस डिराइव करिया, है ना? नेक्स्ट स्नेल्स लॉ अछि, से क्वेश्चन डा मु जाउ छी। देखो स्नेल्स लॉ कोन? The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of
refraction is a constant. It is equal to mu लेखिया किसी दरकार नहीं रे, कहीं ना हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो सिंबल ही mu नहीं छे, हैला जदि mu टा कांस्टेंट हेला देन तारो मीडियम सेडी मेंशन करबनी. The ratio between, हैला the ratio of sine of angle जो लिखी जो, the ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant, is a constant. It is denoted by mu is equal to sin I by sin R, which is equal to constant. Snell's law जेमिति refractive index टा भी सेमती ही define करिवो. अरे पिले समस्ते निज निजर वीडियो ऑप्शन टा ऑन रखो. बासंती वीडियो ऑप्शन ऑन करो. प्रियंका, सरस्वती, गोटे मिनिट पे ऑन करी दियो रे. काउंसिल को जीवो तो हैला समस्त ऑन कर लो. सरस्वती तो ऑन होनी. प्रियंका तो लाइट रो फेस रे बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो. जेमती स्नेल्स लॉ टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम डेफिनेशन रोची. Refractive index of a medium with respect to another is defined as the ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. एडी कौन लिखियो तळे that is mu. एडी केमते लिखियो जानछ ना मु देखे दोची सिंबल ला. देखो mu सिंबल एडा b a
और mu a b आमे फर्स्ट तारो लोअर रु पढ़िया देन अपर को जिबा दैट मींस mu ab or mu ba that means the ratio varies from the medium a to b एडी जो मु लिखिली देखो mu a b माने मीडियम a रु b को जाइछि इज इक्वल टू sin I by sin R that is mu a b indicates the refractive index of medium A with respect to the medium B. Yeah. Refractive index of the medium A with respect to the medium B. जदि मु एडी B एडी A लिखि थांदी तो आमे B रु A पढ़थांदे A B जेहेतु लिखा हिची refractive index of the medium A with respect to the medium B. ହେଲା next question. अरे definition of vector तो अलगा मु types of vector भी कहथिली बोधे types of vector definition the physical quantity which is both and magnitude and direction is known as vector quantity एडी example displacement velocity force देइजो but types of vector रो भी definition आसी पारे types of vector रे कोन कहथिला null vector and collinear vector, coplanar vector, equal vector, negative vector, co-initial vector, parallel and anti-parallel vector, localized and non-localized vectors. 10 types है ना तमरा नोट रे अछि से जिंसो डिक्टेट करा है एच ऑलरेडी क्लास रे 10 टाइप्स ऑफ वेक्टर रो डेफिनेशन भी मन रखि देबो हला नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऊपर टिके फोकस करो वेक्टर जहाँ भी न्यूमेरिकल कहिथिली अरे तम माने ये करिवो directions on x-axis, y-axis and z-axis. सेमती b vector is equal to b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap. b1, b2, b3 kono? These are the coordinates
on the axis of x, y, and z. Then A dot B is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. This is the required formula to get the dot product of two vectors. The example rachi, A vector is equal to 2 I cap plus 3 J cap plus K cap. B vector is equal to I cap plus 2 J cap minus K cap. Here A1, A2, A3, A vector jaha values achi I, J, K सहित coefficient value. A1 asila 2, A2 asila 3, A3 asila 1. Zero coefficient 1 achi kichi nai mane B vector is equal to 1, 2 minus 1. So A dot B kete asila A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. 2 into 1 plus 3 into 2 plus 1 into minus 1, which is equal to 2 plus 6 minus 1. The answer is 7. Okay. Next numerical. Because same our example दिया है ची A is equal to 6 I cap minus 5 J cap plus 2 K cap and B vector is equal to 2 I cap minus K cap. So AD A रे तीनटा जा अछि I रे but B रे कोन I अछि K अछि absent कोन अछि J जो unit vector टा गोटे equation रे absent रोची गोटे vector रे absent रोची then तारो value कौन put करियो coefficient value becomes 0 because there is no j cap. So एडी कौन आसला b1 2 आसला b3 minus 1 but b2 जेतु second value टा 0 y axis रो then b2 is equal to 0. A1 is equal to 6, A2 is equal to minus 5 and A3 is equal to 2. Same formula put kariyo. Final answer is your 10. Then find the angle between A vector and B vector. First dot product definition mu kahithili. A dot B, the dot product of two vectors is defined as the product of their magnitude and cosine of the angle between them. Product of their magnitude and cosine of the angle between them. Product of their magnitude mane A vector magnitude into B vector magnitude and cosine of the angle which is equal to your cos theta. Therefore, A vector dot B vector is equal to magnitude of A, magnitude of B and cos theta. So सब बेले मन रखो जदि हमें गोटे वेक्टर क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड नोचे इट बिकम्स ए स्केलर. ओके बट हमु ए न्यूमेरिकल सॉल्व करला बेलू हमु तार वैल्यू बाहर करियर अछि. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माने कोन आसीबो तार फार्मूला हला रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. तो ए इक्वेशन में cos थीटा बाहर करबा. cos थीटा माने कोन रेस्ट ऑफ द टर्म्स लेफ्ट साइड को नहीं आसो. लेफ्ट साइड कौन अच्छी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से टर्म गुडा को प्रोडक्ट रे अच्छे एपटे आसला कौन डिवाइड हबो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. देखो एडी मैग्नीट्यूड रो फार्मूला मु लिखिची. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 square plus a2 square plus a3 square.
A1, A2, A3 कौन given data in the vector of A, and B1, B2, B3 are the given data in the vector B. The magnitude is equal to the magnitude of any vector is equal to the sum of the square root of the sum. देखो ये ଗୋଟେ example ନେଇଛି A vector is equal to 5ik plus 2jk plus 3kk and B vector is equal to 6ik plus 4jk plus 9k cap. Then find the angle between A vector and B vector. Theta is equal to angle formula कौन theta is equal to cos inverse A dot B by magnitude of A and magnitude of B. From the given data, what is the value of A1, A2 and A3? 5, 2, 3. A1 and A2 and A3. A1 is 5, A2 is 2, A3 is 3. And B1 is equal to 6, B2 is 4 and B3 is 9. So A dot B is equal to general formula जहाँ हमारा थिला A dot B is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. So A1 B1 माने 5 into 6 plus 2 into 4 plus 3 into 9, which is equal to 65. Final answer is your 65. Then numerator सला denominator आसो एथरे कोन अछि दीटा रो मैग्नीट्यूड बाहर करिवो A vector and B vector. A vector रो मैग्नीट्यूड बाहर रो फार्मूला हला A1 square plus A2 square plus A3 square रो root over A1 square A2 square plus A3 square, which is equal to root 38, and magnitude of B is equal to root over of B1 square plus B2 square plus B3 square, which is equal to 133. Cos inverse रे formula put करिवो A dot B रो formula answer आसिला 65. Magnitude of A is equal to root 38 and magnitude of B is equal to root 133. The final answer or the angle between these two vectors is 23 degree and 9 minutes. A vector is equal to I cap plus 2 j cap minus k cap. B vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap minus 2 j cap. Same एडी कौन वैल्यू कौन देछि A1 A2 A3 रो A vector रे I cap रो केते अछि कोएफिशिएंट 1 2 and k रो -1. So A1 रो वैल्यू हला 1, A2 रो वैल्यू हला 2 and A3 is equal to -1. B1 B2 B3 सेमति देखिया 2 3 -2. A dot B same formula A1 plus A2 plus A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3, and the final answer is your 10. Magnitude of A vector and B vector formula is A1 square plus A2 square plus A3 square root. B magnitude hela root over of B1 square plus B2 square plus B3 square. The magnitude of A ro
Answer asila root 6. The magnitude of B is your root 17. And the final answer, the angle between these two vectors is 8 degree. The cos inverse A dot B ro formula re put kole answer asla 10. Magnitude of A is root 6 and magnitude of B is root 17, which is equal to 8 degree. The angle between A vector and B vector is equal to 8 degree. Same numerical ame करते देखी दियो. A vector and B vector दिया हला. A dot B ro formula put करियो again A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. एडी values केते अछि. A1 is equal to 2, A2 is equal to -2, A3 is equal to -2. B1 is equal to 6, B2 is equal to -5 and B3 is equal to 1. Then A dot B becomes 20 after putting the values on the given formula. Then magnitude of A is equal to root over of A1 square plus A2 square plus A3 square, which is equal to 2 root 3, and magnitude of B is equal to root over of B1 square plus B2 square plus B3 square, which is equal to root 62. Now the theta, the angle between A vector and B vector is equal to cos inverse A dot B by magnitude of A and magnitude of B. Put the values you have simplified on the above equations, which is equal to cos inverse 20 by 2 root 3 and root 62. The angle between A vector and B vector is finally get what? 42 degree and 8 minutes. ए केस टा देखो. A vector रे कोन कोन प्रेजेंट अछि. I J अछि, K नाही, माने A3 रो वैल्यू टा 0 होबो. सेमती B vector रे I J अछि, सेम एठी भी K रो वैल्यू देनी, माने B3 टा 0 होबो. तो A dot B रो फार्मूला रे कोन A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. A3 B3 तो 0 होबो. छाड़ो सेटा तो 0 रो कैलकुलेशन रहला, ताकू कैंसिल करो. रहिला केते आउ A1 B1 plus A2 B2. The final answer is 52. सेमती magnitude of A बाहर करियो root 61, magnitude of B बाहर करियो by the using the formula root 53, and the final answer is theta between A vector and B vector is equal to 23 degree and 9 minutes. ଏବେ discuss କରିବା cross product. Cross product same equation ଦେଇଛି. Formula କଣ ଆସିଲା cross product ର? Determinant of the values. Mathematics रे जहाँ determinant रे पढ़िथिलो, सेही formula same way रे ही use करबो. I cap, J cap, K cap, then secondary
A1 A2 A3 third रे B1 B2 and B3 हमर हला एरा डिटरमिनेंट एटा केमति रो कॉलम यूज करियो रो माने horizontal lines column means vertical lines हैला vertical रे जहा तमे देखुछो सेडा हला तमर column horizontal रे जहा देखुछो सेडा हला तमर रो हैला तो तार फार्मूला आसिला कोन आई कैप माने आई टा जो रो जो कॉलम को लिंक अछि से दीटा तमे ऑफ कर देबो बाकी जहा टर्म रहिला सेडा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबो तो आई टा कोन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऑफ करबो बाकी कोन रहिला a2 b3 minus b2 a3 okay then second j into j टा कोन फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ऑफ कले जहा रहिला सेडा कोन a1 b3 minus b1 a3 एटी गोटे जिंस तमे मार्क करो आई टा प्लस रे अछि जे टा माइनस रे अछि पुनी के प्लेस रे आसला प्लस प्लस अछि देखो प्लस अछि तो जे टा काहे कि माइनस हला हमेरो पोजीशन इफेक्ट हो जेडा तार प्लेस कोन यदि प्लेस ता तारो इवन पोजीशन रे अछि देन दैट इज प्लस यदि प्लेस ता ऑड पोजीशन रे अछि दैट इज माइनस तो जे रो पोजीशन कोन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम रो फर्स्ट column second माने 1 plus 2 which is equal to 3 and 3 is an odd number सेति पे हमें j पूर्वरु माइनस देछि यदि i कंसीडर करिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 plus 1 2 छाड़ो k फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 plus third माने 3 1 plus 3 which is equal to 4 and that is an even number तो k रे हमें प्लस रखिले ओके formula is I into A2 B3 minus B2 A3 minus J into A1 B3 minus B1 A3 plus K into A1 B2 minus B1 A2. याको बेस करी न्यूमेरिकल A1 A2 A3 के दे देला 3ik plus jk plus 5kk b vector is equal to 2ik plus 3jk plus 6kk तो तार वैल्यू प्लेस करले फार्मूला रे पुट करियो जर तार वैल्यू तो आसी लगे 9ik plus 8jk minus 7kk सेम फार्मूला रे पुट करियो a वेक्टर देला 2ik minus 3jk plus 5kk b वेक्टर देला 9ik plus jk minus 2kk सेमती रो कॉलम रे ताको प्लेस करिवो प्लेस करले फाइनल आंसर आसिला ik plus 49jk plus 29kk हैला एति के न्यूमेरिकल तो हमें डिस्कशन कर देले आजी नेक्स्ट क्लास रेस्ट जो पार्ट अछि मु सेरा डिस्कशन करी तमन संगरे ओके आउ 2 मार्क्स रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन उडा को हमें से दिन डिस्कशन करिया हबो जदी तो मु क्वेश्चन सेंड कर दोछि for the maximum number of students participating on the live class in Zoom and I hope it is too much beneficial for you. Okay, see you on the next class.